चलें जी फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is our new chapter, chapter number 8, and the title of the chapter is Automotive Wiring and Wire Repair. Automotive wiring. So, slide number 3, automotive wiring, definition and terminology. Most automotive wire is made from strands of copper covered by plastic insulation. Copper is an excellent conductor of electricity that is reasonably priced and very flexible. However, solid copper wire can break when moved repeatedly. Therefore, most copper wiring is constructed by multiple small strands that allow for repeated bending and moving without breaking. तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात की गई है कि जो आपकी ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में जो मीडियम है ऑफ कंडक्शन दैट इज ऑलवेज अ कॉपर वायर. ठीक है. सो we use copper through to allow electricity to pass. Now we can always use many other metals or alloys, but in most applications, copper is preferred because it is low priced, it is available in abundance, and it is flexible. However, we must not forget that a simple wire of copper, it will break away when we move it or twist it many times. Therefore, to overcome such problem, instead of using one complete copper wire, a number of small strands. Strands क्या होते हैं? Strands are thin area wire of copper. We use thin area wires and we make them collected together to make them a bunch of wire, and then they become much more flexible as compared to one copper wire itself. So strands are always preferred when compared to one single wire. And we will see in सर a diagram in a later slide the comparison सर between a strand and a simple copper wire. हाँ जी. सर ये जी पूछे. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा पूछे. चलें, बहरहाल आवाज नहीं आ रही तो जब वो ऑनलाइन हो जाएंगे तो दोबारा हम उनकी बात सुन लेते हैं. सो जी सर जी पूछें क्या हुआ. सर वो मैंने कहा था वो अटेंडेंस बनाते हैं सबको, ये रिमूव करी जा रहे हैं बार बार. ओके. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. एक थैंक यू. चले जी. तो in this diagram, chart 8.1, we see a variety of metals or alloys that are all conductive in nature. So we see that there is silver, there is copper, there is gold, aluminium, tungsten, zinc, brass, platinum, iron, nickel, tin, steel, and lead. However, the most common ones that are used for wiring purposes, they will be copper, aluminium, and tungsten is used as load in light bulbs.
In some cases, we can also find iron and steel. For example, the body of the vehicle or the ground, including the engine body, is always of iron and steel. So we can also say that iron and steel are also a conductive, are used as conductors in in this automotive applications. Right. Solid copper is generally used for components such as starter, armature, and alternator stator winding that do not bend or move during normal operation. तो अब ऐसा नहीं है कि सॉलिड कॉपर वायर को आप यूज ही नहीं करें. सॉलिड कॉपर वायर भी यूज होते हैं, वहां पर यूज होते हैं जहां पे जनरल मूवमेंट नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, जो आर्मेचर ऑफ जनरेटर्स, ये जो जनरेटर्स होते हैं और आवर स्टार्टिंग मोटर्स, उनके अल्टरनेटर में जो वायरिंग की जाती है, दोज वायरिंग्स आर नॉर्मली मेड ऑफ सॉलिड कॉपर वायर. तो उन एप्लीकेशंस में आपको स्ट्रैंडेड कॉपर नजर नहीं आएगा, वहां पे आपको सॉलिड कॉपर अवेलेबल होगा. आगे बढ़ते हैं. कॉपर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर besides silver, which is a great deal more expensive. The conductivity of various metals is rated. So copper is the best electrical conductor in terms of price and availability. However, in terms of conduction, the best conductor is gold and silver, but due to their higher prices, it is not feasible to use gold or silver in automotive applications. Now we come to the next slide, slide number 4. American wire gauge. American wire gauge is a procedure to specify a certain wire. It is a gauge. It is a unit of measurement. So, wiring is sized and purchased according to wire gauge size. जो wires available हैं, they are sized, they are dimensioned according to a gauge size, as assigned by AWG, the American wire gauge. American wire gauge क्या होता है? American wire gauge एक नंबर होता है या एक सीरीज ऑफ नंबर होता है जिसमें कॉपर वायर, प्लास्टिक कॉपर वायर, इनके डायमीटर्स इन वन नंबर मेंशन्ड होते हैं. AWG numbers can be confusing because as the gauge number increases, the size of the conductor decreases. ये बहुत ज़रूरी इस बात समझने के लिए कि ये जो गेज नंबर है या ये जो अमेरिकन वायर गेज है, इसके नंबर जो इंक्रीज करते जाएंगे तो इन एक्चुअल द कंडक्टर वायर साइज या कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज करता हो जाएगा. So if we have two wires, one is AWG 10 and second is AWG 20, then which one will be of smaller diameter? It will be AWG 20, and AWG 10 will be of larger diameter. Therefore, a 14 gauge wire is smaller than a 10 gauge wire. A 14 gauge wire diameter is small, whereas a simple 10 gauge wire diameter is larger. The greater amount of current in ampere that is flowing through a wire, the larger the diameter, smaller gauge that will be required. So if we have to allow more current to flow, then we have to use a wire of larger diameter, and since we are using a wire of larger diameter, then a smaller gauge number
will be required. So chart number 8.2 compares the AWG number to the actual wire diameter in inches. So अब हम जरा देखते हैं what is chart number 8.2. सर ये जो स्मॉलर गेज नंबर है, इसका मतलब ये है कि जितना स्मॉलर गेज नंबर होगा उतना ज़्यादा करंट पास कर सकता है। जितना स्मॉलर गेज नंबर होगा उतना डायमीटर ऑफ कॉपर वायर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डायमीटर कॉपर वायर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है सर। ओके now in this slide we see chart number 8.2. This is chart number 8.2. The title is American wire gauge number and actual conductor diameter in inches. So this is a table which compares the American wire gauge number to the wire diameter, and the wire diameter is presented in inches. इनको आप सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, सो ये याद रखें कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज सिंपल वायर डायमीटर ट्वाइस द रेडियस, 2 times the radius. For example, AWG20 is a wire. AWG20 is a wire whose diameter is only 0.0319 inches. Similarly, AWG16 is a wire whose diameter is 0.05 inches. Likewise, AWG12 is a wire whose diameter is only 0.0808 inches. So we can see that as the wire gauge number is decreasing, the wire diameter is increases. So AWG20 has the smallest diameter, whereas AWG0 has the largest, or 00 has the largest diameter. सर ये वैल्यूज तो नहीं याद करनी? नहीं, इन वैल्यूज की याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल आपको समझाने के लिए, याद कौन करे। ओके, नाउ लेट अस कम टू चार्ट नंबर 8.3. Chart number 8.3 demonstrates metric wire size in millimeter square as compared to AWG. So in this diagram we now see the AWG wire compared to its cross-sectional area in millimeter square. Cross-sectional area measured in millimeter square, that is 20. AWG20 has cross-sectional area of 0.5 millimeter square. Likewise, AWG14 has a cross-sectional area of 2 millimeter square, and AWG10 has a cross-sectional area of 5 millimeter square. So again, in this chart or in this table, we observe that as the wire gauge decreases, as the AWG wire size decreases, the cross-sectional area of the wire increases. Now, what is the benefit of using large cross-sectional area? More current flows. So the benefit is that we can Fine conduction.
we can adjust more current, we can allow larger current to pass through the wire. In automobile applications, there are certain loads that demand large current, and there are certain loads that demand smaller current. So those loads that demand large current, we have to furnish large wire or large conductor. So we will use AWG of smaller value. But to serve loads of lighter current, of small current, then we need smaller diameter, smaller cross-sectional area wire, and we can use AWG of larger value. For example, 20, 18, or 16. These small loads include lights, they include small motors, whereas large loads, they include the crank motor, the starting motor, the alternator, and so on. Now, chart number 8.4 is very interesting. Chart number 8.4 is very interesting. This is the recommended wire against the load. This shows the recommended wire cross-sectional area that will be used for certain amount of ampere, and in the vehicle we are using only 12 volts. So if the load demands 5 amperes, if the load demands 5 ampere and the total length is 3 feet, then which AW gauge number of wire should we use? We should use 18. If the load demands 5 amperes, then we should use AWG wire gauge number 18. Similarly, if the load demands 50 amperes and we are using a total length of 3 feet, then we should use AWG 16. But if the length is increased, let us say up to 10 feet, then for 50 ampere we should use 12 number AWG. The reason why we have shifted from 16 to 12 is that when 50 ampere flows through the wire, the copper wire has certain resistance. When large current flows, there will be large voltage drop, and this voltage drop will be decreased from the 12 volt battery. Therefore the voltage that is being provided to the load will not be exactly 12 volts. It will be smaller than 12 volts. So how to overcome this? We use a wire of larger area. When we use a wire of larger area, then we have further decreased the resistance. When we further decrease the resistance, the resistance will decrease the voltage drop, because the resistance, the formula for resistance is rho multiplied by length divided by area, and the unit is always ohms. So this chart number 8.4 recommends the wire gauge number that should be used for various load currents in terms of current. Now we come to the next slide. Ground wires. Ground wires are wires that connect between the engine and body
and between body and negative terminal of the battery. In the last lecture, we studied one example where we saw that instead of using one large or one lengthy wire to return the current from the load to the battery, we can always use the metallic body of the vehicle as our return path. So what we did was that we connected a wire from the battery to the body. ये बात याद है सबको? तो लास्ट टाइम हमने ये डायग्राम देखा था 4.1 एंड 4.2. तो कनेक्शन के दो तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि वी हैव अ बैटरी and from the positive terminal we connect the fuse and then we connect the wire to the load, and then the negative path is determined or it is executed with the help of a separate wire which runs from the load to the negative terminal. एक तो ये तरीका था, लेकिन इस तरीके में this technique has a certain drawback that it makes the circuit very complex. It requires too many wires. It will make the automotive vehicle heavier. It will make the wiring system more complex. So the alternate procedure is that we use the same battery and connect the load, and instead of connecting the return path to the battery, we connect to the metallic body. This metallic body can be the vehicle body or it can be the engine. Then what we do is that we connect one wire from the negative of the battery and connect it to the metallic body. So the metallic body is a natural conductor. So we don't need extra wire for the return path. ये बात याद है सबको? जी सर. So yes. So this means that the return path, will carry large current. It will carry large current. So how do we adjust large current? We adjust large current using a larger diameter of the conductor. ठीक है. So ये जो return path होगा, this should be of large current handling. It should have large current handling capacity. तो इसको adjust करने के लिए what we have is, so now the large conductor. So a large conductor is used between the negative terminal of the battery and the body, and this large conductor is as shown in this diagram. सर एक क्वेश्चन है. हाँ जी. सर ये जो ग्राउंड स्ट्रैप है ये सिर्फ नेगेटिव से बॉडी की तरफ लगता है या तो जो लोड है लोड से बॉडी की तरफ भी एक लगता है? नहीं, इसको आपने प्रेफरेंस देनी है कि ये नेगेटिव टू द बॉडी लग जाए. ठीक है सर. क्योंकि जो बाकी लोड्स हैं उनको जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होंगे उनको हम सेपरेट वायर्स के थ्रू एनर्जाइज करेंगे. ठीक है. लेकिन रिटर्न पाथ एक होगा. अब ये जो रिटर्न पाथ है, खासकर जो फिगर दिखाई जा रही है, इट इज ब्रेडेड ग्राउंडेड स्ट्रैप. इट इज ब्रेडेड ग्राउंडेड स्ट्रैप. क्या मतलब है ब्रेडेड ग्राउंडेड का? कि इसकी जो वायरिंग या जो स्ट्रैंड्स हैं उनके अरेंजमेंट को आप बोलते हैं ब्रेडेड, एंड इट इज नॉर्मली अनआइसोलेटेड. It does not have any plastic covering. It is available. It is available without any plastic cover. Now, it is not necessary
to insulate a ground strap because it does not matter if it touches metal. ये क्या लिख दिया उसने? इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले ही बॉडी It is not necessary to insulate a ground strap because it does not matter if it touch metal as it is already attached to the ground. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले ही मतलब कि बॉडी के साथ कनेक्ट किया गया उसको, क्या कहते हैं, ब्रेडेड वायर को, तो अगर आप दरमियान से किसी से टच हो जाती है या इंजन के साथ टच हो जाती है तो फिर भी कंडक्शन ही होनी और कोई मसला नहीं होगा उससे बल्कि लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी और मजीद रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, यस। तो इसका मतलब ये है कि देखें, ये जो वायर आप यूज कर रहे हैं इसको आप यूज कर रहे हैं टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. Negative terminal of the battery is already at 0 volts. It is already at 0 volt. Therefore, it becomes unnecessary to cover it with plastic casing. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा, ये जो ब्रेडेड है उसका क्या फायदा होगा? ब्रेडेड का आपको फायदा ये है कि it becomes more flexible. It is more flexible. And it increases the life of the grounded wire. लेकिन at the same time ये आपने बात याद रखनी है कि हर दफ़ा uninsulated हर दफ़ा आपको पर्पस सर्व नहीं करेगा. There are situations where we need insulation, we need plastic insulation to cover the wire. And that type is called insulated copper wire. वो एक normal copper wire है, stranded या non-stranded, but it is covered with PVC. The PVC is used so that we prevent the positive terminal touching the negative terminal, because if positive terminal makes electrical contact with negative terminal, we will result in a short circuit. और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो देन वे विल हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, और ये जो लार्ज करंट है ये बैटरी को ड्रेन या बैटरी को फिनिश कर देगा. सर ये एक और दफा बता देंगे कि समटाइम्स मैं ये कह रहा हूँ कि हर दफ़ा ब्रेडेड वायर सक्सेसफुल नहीं होते. उसकी वजह ये है कि we need at certain positions we need insulation. अगर आपके पास एक बैटरी है, उसके दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया. अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं विद द बॉडी एंड देन बाय मिस्टेक देयर इज इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट विद पॉजिटिव वायर टू द नेगेटिव यहाँ पे, so this will short circuit the battery, and short circuiting the battery means that we are now draining the battery. The battery will finish its current very quickly. So in some cases we need insulated copper wire. अब यहाँ पे एक टर्म लिखी आ रही है, स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट ये होता है कि इन सर्टन एप्लीकेशंस जहाँ पे आप एसी और ऑल्टरनेटिंग करंट या लार्ज फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, ब्रेडेड वायर जो होती है वो स्किन इफेक्ट को रिड्यूस कर देती है. ब्रेडेड का एक फायदा ये भी है कि स्किन इफेक्ट क्या होता है कि वो करंट जो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, उस हाई फ्रीक्वेंसी करंट ने रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बना देना है. ब्रेडेड आपको ये फायदा देगा कि उसकी नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देता है. Therefore, skin effect is the term used to describe how
high frequency AC electrical flows through a conductor. जब हाई फ्रीक्वेंसी AC इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कंडक्टर में से, तो कंडक्टर एक रेजिस्टेंस बन जाता है. ये हाई फ्रीक्वेंसी का एक फिनोमेना है. अब इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आप यूज करें अगेन ब्रेडेड ग्राउंड स्ट्रैप. ब्रेडेड ग्राउंड स्ट्रैप का क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा होता है, देयरफॉर जब हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस नेचुरली कम हो जाएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ divided by area. When the area increases, the resistance decreases. So जो grounded या जो braided grounded straps हैं, they always decrease the resistance. और ये जो अल्टरनेटिंग और ये जो फ्रीक्वेंसी है या जो स्किन इफेक्ट है, ये आप स्पीकर्स में, ऑडियो स्पीकर्स में, इसमें स्मॉल डायमीटर कॉपर वायर इंस्टेड ऑफ फ्यूअर लार्ज स्ट्रेन्स, बिकॉज स्मॉलर वायर हैज ग्रेटर सरफेस एरिया एंड देयरफॉर रिजल्ट इन लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ AC voltage.